Now moving on, these are some questions. I guess you can answer it quickly so that we can move on to the next one. Option B in first. Option C. Okay. After Rajendra Chola returned from his voyage to Indonesia, he dashed to visit the temple in Tanjavur. He was wishing past continuous tense में आ रहा है, जो इसका कहना है कि he was wishing and he is still wishing. Not possible. Is wishing ये तो प्रेजेंट में आ जा रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी केस में, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज कंटिन्यूस. He wished, simple past. He had wished, right? Past perfect. तो इंस्टेड अब यहाँ पर कंफ्यूजन जो होगी वो होगी सी और डी के बीच में कि विश जाएगा कि हैड विश जाएगा. तो ओवर हियर द करेक्ट आंसर विल बी had wished rather than wished. He had wished to visit because it was past perfect. ये चीज हुई थी and हो चुकी है. It is over now. So it will come inside past perfect and the correct answer will be D rather than C. ये confusion होगा. Yes, there will be a confusion. So ये वाले जो questions होते हैं we usually keep it on stake कि ये अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आया तो it can cause negative marks. So only if you are sure then only इस में attempt करना. बहुत रेयर केस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर आपसे ग्रामर पूछा जाता है. यस, इफ यू हैव सम नोट्स ऑफ ग्रामर जो आपके स्कूल डेज आपके पास पढ़े होंगे तो एक बार देख लेना. व्हाट इज पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस. तो ये आप जब डिफरेंट फॉर्म्स एक बार पढ़ लोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्यों ऐसी हैड विश आई है. द नेक्स्ट वन, research in the workplace reveal that the people work for many reasons. Option D. Besides money. Yes, D. so this is quite simple. It's D, besides money. Yes, next, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन. Option C. Srinivas and Murali. Okay, very good. Yes, sir. Option C. Right. Let's see how this can be solved. Rahul, Murali, Srinivas and Arul. They are seated around a square table. तो square table है जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर एंड जिसकी चारों तरफ ये लोग बैठने वाले हैं. एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट कि कौन किसके अपोजिट बैठा हुआ है. राइट, सो ओवर हियर राहुल इज सिटिंग लेफ्ट टू मुरली. तो पहली चीज, अच्छा यहाँ ये दिया हुआ ना, राहुल इज सिटिंग लेफ्ट टू मुरली. सो इफ आई कंसिडर मुरली यहाँ पर है तो राहुल इज गोइंग टू बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मुरली विच टर्न्स आउट टू बी हियर. तो दो चीज पोजीशन मेरे को पहले पता चल गई. अब मुझे बाकी दो को सेट करना है इन सच ए वे दैट श्रीनिवास टर्न्स आउट टू बी ऑन द राइट ऑफ अरुल. सो अगर मैं अरुल को यहाँ पर बिठाता हूँ तो श्रीनिवास क्या उसके राइट में होगा? तो नहीं, अरुण इस साइड को फेस कर रहा होगा एंड दिस विल बी द लेफ्ट ऑफ अरुल. सो दिस वोंट वर्क. सो इंस्टेड ऑफ इट आई नीड टू स्विच द पोजीशन. आई विल कीप अरुल ओवर हियर एंड अरुल को अगर मैं इस साइड को फेस करके बिठाता हूँ तो ऑन द राइट हैंड साइड दिस वन, दिस वी श्रीनिवास. इट पॉसिबिलिटी यही है. So from this, I say that this is the position. Now I need to identify which of the following pair are seated opposite to each other. Rahul and Murali वो तो साथ में ही है. श्रीनिवास और अरुल वो भी साथ में है. श्रीनिवास एंड मुरली
Srinivas and Murli, yes, that's the correct answer. Srinivas and Murli. Srinivas and Rahul, obviously not. They are also together. So only C correct answer. Next one. Option D 36. Yes, option D. Okay, let's see what is the correct answer over here. You have to find out the smallest number y such that y is a perfect cube. तो फॉर दिस इसके लिए सबसे अच्छा मेथड यही प्राइम फैक्टराइजेशन का जो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं 6 + 2 8 + 1 9 9 is divisible by 3 so okay I can start from 2 as well. I'll get 81 over then 3 27 3 9 3 3 3 1. Right, so I will be having 2 into 3 into 3 into 3 into 3. Now I need to make it perfect cube. Perfect cube बनाना है तो ये तीन तो मेरे पास पैर हो गए तो ये तो तीन क्यूब चले गए and now I need to multiply it by 3 into 3 and 2 into 2. तो ये तीन तीन के पैर बन जाएंगे मेरे पास so I need to divide by 9 into 4 that is 36 so correct answer will be 36. Right, a simple one. Let's move on to the next one. Yes, again two questions of English. Sir, explain once again. Last question. Yes, okay. See, I guess this was clear कि यहाँ पर हमें prime factors मिल गए हैं. So write down this 162 as 2 into 3 into 3 into 3 into 3. Right? So ये prime factors आ गए 162 के. Now I need to make it perfect cube. So for making a perfect cube, what I need pair of threes. So if I pair of digits, right, or three numbers, तीन नंबर के कोई pair मिल रहा है तो मेरा और a group of three rather than a pair, I will say group of three. तो एक ग्रुप तो मेरे पास आ गया 3 into 3 into 3. So this will be coming out of the cube root. बाकी जो दोनों ये दोनों मेरे पास नंबर बच जाएंगे. So I need to make them in group of three. Make a group of three for them. Now in order to make a group of three for them, मुझे 2 के साथ 2 और 2 देने पड़ेंगे. Then multiplied by 2 into 2. तो ये तीन 2 हो जाएंगे. Again a pair of 3. And एक 3 अकेला बच रहा है तो उसके साथ भी मुझे 2 और 3 देने पड़ेंगे so that it becomes a group of 3. So over here if you solve it will become 36. Okay. Yes. Try to solve this one. Option D.
Yes, that's the correct answer. Option D. If you talk about aversion, it is opposite, which is like not liking something, that is dislike. It's सही है. They are synonyms. Luminous, something full of light, and radiant. They are synonym. Plunder and loot. They are similar thing. And the last is yielding. Yielding means to say give something, and resistance to oppose something. So they are not similar. So correct answer will be D. The next one. Option B, bright enough. Yes. So that is correct. D, simple one. Sorry, B over here. The Saturn is bright enough to be seen on clear night with a naked eye. So B will be the correct answer over here. Let's try to solve this. Option A, V. Okay, I got one answer. Let's try to solve this one. No, sir, There are, option A, B. okay. There are five buildings. Option A, Uh, B. very good. V, W, X, Y, Z, and they are in a row, but not necessarily in this particular order. कुछ भी हो सकता है. And east and west, this has been given. So I'll use this particular chart कि यहाँ पर east है हमारा, यहाँ पर west है, north above, south नीचे. Now we have been given some of the hints to identify the order. Let's try to do this one. V is on the left side of W. So V है वो W left side में है. Now this has been given. Z is on the east side of X. So अगर X यहाँ पर कहीं पर है तो X की east side में है हमारे पास Z है. And west of W. Z is on the west of W. Sorry V. So Z is on the west of V जिसके हमारे east side पे X है. Now this has been given. And W is to the west of Y. Y के west में है हमारे पास. Sorry, W is to the west of Y. So Y के west पास W आ गया. This has been given. So यहाँ पर हमको identify करना है which building is in the middle. Yes, that's correct. V is going to be in the middle. Right, a simple one. Let's move on to the next one. Yes, this question.
Sir, option B 15. Yes, that's the correct answer. Very good. Okay. Let's see how we can do this. A test 70 questions worth 100 marks in total. There are two types of question: multiple choice question of worth of 3 marks, and the essay type questions are worth of 11 marks. Now, how many multiple choice questions does the exam has? We need to identify. बहुत simple है. So we know that there are going to be 20 questions. So x plus y is going to be 20. Now 3x plus 11y is going to be 100. Right. So if I multiply the first equation by 3, I'll get 3x. Or let's say multiply it by 11. That is beneficial. So 11x plus 11y is equals to 20. जो देगा आपको 8x equals to 120. Means x equals to 50. Now, what is x and y over here? X is number of, that is MCQs, and y is your essay question. So this equation has been multiplied by 11 over here. So the correct answer will be B, 15. Simple yet interesting question. Let's move on to the next. ये भी बहुत simple है. Option B 144. Let's see. So 40% we need to denote 40% of. We need to identify number of degrees. Total number of degrees that we have is 360. So we need to identify 40% of 60. So 4 by 10 of 360, which is again 144. So 144 will be the correct answer. You should understand this part कि यहाँ पर total angle हमारे पास जो होता है that is 360, जो एक हमारे पास हो सकता है maximum एक pie chart के अंदर. Next one. Sir, option B only 2. Yes, that's correct answer. Okay, let's see how this can be done. Some tables are shelves, some shelves are chair, all chairs are benches. You have to identify which of the conclusions can be deduced. So tables जो हैं हमारे पास, some of them are shelves. So tables are there, and some of these tables are shelves also. Now some shelves are chairs. So I can say that yes, some shelves are chairs also. Which are tables also. I can say it can be tables, it cannot be. दोनों possibilities हैं. But I know that all chairs are benches. So जितनी भी chair है वो benches हैं. Now we have to identify at least one bench is a table,
bench is a table. A chair can be table or it cannot be a table. A bench can be table, cannot be table. So can be और cannot be, दोनों possibility है हमारे पास. That's fine. इसकी surety नहीं है, so we cannot say this one. At least one shelf is a bench. At least one shelf is a bench. Yes, because chair is shelf, so bench is going to be shelf. So this is correct. At least one chair is a table. No, ये भी नहीं है because yes, it can be, it cannot be. But इसकी surety नहीं है. Nothing has been mentioned in the question. This is correct. All these are chairs. All benches are chairs. No, all chairs are benches, but all benches are not chairs. So this is incorrect. So only two follows. B is going to be the correct answer. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, like chairs मैंने यहाँ पर बना दिया and bench पर हो गया. So ये जो चीज है ये यहाँ पर follow करती है. At least one shelf, बाकी at least one chair is a table. So no chair is a table over here, and at least one bench is a table. So no bench is a table over here. Next one. It is pretty simple, interesting question. Try to solve this one. Option A and sorry, option B. Okay, let's see what can be done over here. A rule states that in order to drink beer, one must be over 18 years old. In a bar, there are four people, P 16 years old. पहले question पढ़ लेते हैं last. What must be checked to ensure the rule is being followed? That the beer, in order to drink beer, one must be 18 years old. So P 16 years old, he or she cannot drink beer. तो ये तो चला गया P वाले option हमारे and is okay. P is 16 years old, so it needs to check if P is drinking beer or not. 20 Q is 25 years old, so Q का हमारा कुछ काम नहीं है because he is 25 years old and he or she can drink beer. R drinking milkshake, इसका भी कुछ काम नहीं है हमें. So Q and R के जो भी option है that doesn't matter. And S is drinking a beer, but so if S is drinking a beer, we need to check its age. So P's drink and S age, that will be the correct answer. So B will be the correct answer. P's drink and S age. ये जो चीजें यहाँ से पता चलती है, B is 16 years old and S is drinking a beer. Next one. Option A, 8 kilometers in east.
Let's see how this can be solved. So I'll just make a map over here. East, west, north, south. Now Fatima starts from a point P. She goes north for 3 kilometers. Let me make it over here. She is going north 3 kilometers. This is your point P where she is starting from. And then east for 4 kilometers to reach Q. तो यहाँ से पहुंची east 4 kilometers and यहाँ पर हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है Q. She then turns to face point P. So इस direction में and she goes 15 kilometers in that direction. So 15 kilometers in that direction she is going. So 15 kilometers total. She then goes north for 6 kilometers. So in the direction, again 6 kilometers. How far is she from the point P? So ये जो है, let's say this is final point जहाँ पर भी है to find out. And in which direction does she go to reach point P? So obviously या तो east ही आएगा, north तो नहीं होगा, या तो north east आएगा या east आएगा. So this can be the answer. Now अगर इसको solve करने जाते हैं, what we get is we have 3 over here, so this is going to be 5 as per Pythagoras theorem, right? So ये हमारे पास 5 हो गया, total 15 है, so this will be left 10 because this whole is 15. और यहाँ पर मुझे दिया हुआ that she goes 6 kilometer in the north direction. So अगर मैं इस triangle की बात कर रहा हूँ, so again I have a triplet over here जो Pythagoras बना रहे हैं, triangle बना रहे हैं, right angle triangle बना रहे हैं. So I have 10, 6, so third one will be 8. So in which direction should she go? How far is she from point P? She is 8 kilometer in the east direction. And in which direction should she go? She should go in the east direction. She is on the west direction and she should go on the east direction. So the correct answer will be 8 kilometer east. The correct one. Yes. Try solving this one. अगर नहीं आएगा तो I'll tell you this one. Okay, I'll tell you about how this can be solved. Then you can apply the formula over here. The 500 students, there are 500 students that which are taking one or more courses of chemistry, physics, and math. Registration records indicates that the course enrollment as follows. So the number of students in chemistry is 329. Number of students in chemistry is 329. Number of students in physics is 186. Number of students in maths is 295. Number of students in chemistry and maths, and physics is 83. Sorry, intersection will be there. Number of students in chemistry and maths is going to be 217, and number of students with physics and maths is going to be 63. We have to identify how many students are taking all the 3 subjects. So it says that number of students, like a formula ऐसा बनेगा, chemistry
union physics union maths, this will be equal to number of students in chemistry plus number of students in physics plus number of students in maths, जो तीनों का आएगा माइनस जो तीनों का इंटरसेक्शन होता है, that is number of students in chemistry physics minus number of students in physics maths minus number of students in physics chemistry. ये चीज तो हो जाती है. इसके अलावा अब जब हम ऐसा इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज बेसिकली हम जो कॉमन एरिया उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक एरिया जो होता है जो दो बार सब्ट्रैक्ट हो जाता है वो होता है तीनों का कॉमन एरिया, तो उसको हम यहाँ वापस ऐड करते हैं. दैट इज योर केमिस्ट्री इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स. तो ये जो हम इसका आप अगर बनाओगे वेन डायग्राम समझ में आएगी कि यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं. सो ये एरिया एक बार सब्ट्रैक्ट होता है, ये एरिया एक बार सब्ट्रैक्ट होता है, ये एक बार हो जाता है. ये वाला जो एरिया है दिस इज गेट सब्ट्रैक्टेड 2 टाइम्स. तो ये एक बार ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए इसको ऐड करना पड़ता है हमें यहाँ पर. सर ऑप्शन डी 53. दैट्स करेक्ट. सो ओवर हियर अगर आप इस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे गेट द फाइनल आंसर दैट इज 53. 53 इज द करेक्ट. Now moving on to the next question. Yes. ये एक अच्छा रीजनिंग का क्वेश्चन है. ट्राई टू सॉल्व दिस वन. Sir, option D cannot be determined. Okay, anyone with a different answer? सर ऑप्शन सी. Okay. Okay, let's try to solve this one. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. We are three people, P, Q and R were talking about S car collection. P states that S has at least 3 cars. So P का जो statement है that is that at least 3 cars. Which basically means greater than or equal to 3. Right? Q believes that S has less than 3 cars. Right? Less than 3 cars. So less than 3 cars. And R indicates that to his knowledge, sorry, yes, R ऐसा बोल रहा है, to his knowledge, S has at least one car. At least one car. So greater than or equal to 1. Only one of P car is right. So इन तीनों में से एक तो करेक्ट है. The number of cars owned by S is. अब इन तीनों में से एक करेक्ट होना चाहिए. अगर इन तीनों में से एक करेक्ट है, we cannot say that it cannot be determined. Let us solve this one. अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन रखता हूँ, जैसे आपने बोला B, तो B अगर मैं रखता हूँ, अच्छा यहाँ पर एक स्टेटमेंट है that only one of them, तो कोई भी एक ही करेक्ट होना चाहिए. अगर मैं 1 लेके चलता हूँ,
So in that case, R will be correct. Q will also be correct. तो दो दोनों सही हो जाएंगे. So one is not going to be the answer. If three, at least three cars. Yes, it is correct. At least one car. This is also correct. This cannot be the option. If I take zero, Q is going to be the correct. Q is going to be correct. P गलत हो जाएगा. R भी गलत हो जाएगा. So only one will be correct. That is Q is going to be correct. So as per this statement, I say that Q is correct, and number of cars owned by S will be 0. तो यहाँ पर हमारे जो कंडीशंस है वो भी सेटिस्फाई होती है, राइट, ओवर हियर. So सिंपल क्वेश्चन है. Now moving on to the next one. Yes, ये भी बहुत सिंपल है. Try to solve this one. Option C, 1/2. Yes, that's pretty simple. Option C, 1/2. So it has been given that a couple has two children. The probability that both children are boys. Older one is a boy. So if older one is a boy, what chances we can have? The younger one can be a girl or a boy. Now what are total number of chances? Boy, girl, boy, girl, boy, girl. So two strictly हमारे पास ये possibilities है. So favorable chances that both the children are boy if the older one is boy. तो ये हमारे पास confirmed है. And total number of options that we can have is 2. So the correct answer will be 1/2. Right, so C will be the correct answer. वैसे प्रोबेबिलिटी ये होती है, लेकिन हमें ये चीज दे दी है कि वन इज गोइंग टू द एल्डर वन, सॉरी एल्डर वन इज गोइंग टू बी बॉय. सो हमें सिर्फ इसी चीज का कंसिडर करना है, एंड इसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2. नेक्स्ट वन. Cannot be determined. Yes, sir. Option D. Okay, what if I say it can be determined? Will your answer change? Try to solve it then. सर बट क्यू का कुछ नहीं दिया हुआ ना. यस, so Q के दो केसेस बनेंगे. Over here it has been given that P looks at Q and Q looks at R. P is information दी हुई है. R is not. So R Option is B, 1. unmarried. Q के बारे में नहीं दिया हुआ. So if someone asks you that number of people in which married person is located unmarried, ये condition दी हुई है, married looking at unmarried. तो ऐसे कितने लोग हैं हमारे यहाँ पर? तो हम क्योंकि Q की condition नहीं दी हुई है, yes, the most common answer can be cannot be determined. But what if it can be determined? कैसे? So क्योंकि हमारे पास दो condition होंगी, either it is married or it is unmarried. So if I talk about the first case married, उसमें अगर जब P Q के ऊपर Q से देख रहा है, so it will be like a married person located at a married person. ये केस हमारे केस का नहीं है. Then if I talk about Q to R, a married person looking at unmarried person, yes. So number of people, it is 1.
Right. Now, similarly, if Q is unmarried, if I talk about P is looking at Q, that basically means P married is looking at unmarried. So this is the condition we need to consider. The second is Q is looking to R, so an unmarried person is looking to unmarried person. हमारे काम का नहीं. So in that case, also only one person is looking at, only one married person is looking at an unmarried person. The correct answer is going to be one in both the cases, whether Q is going to be married or unmarried. Let's try to solve this one. Option D, neither one Option nor D. two. Yes. Let's see. All benches are bed. The first thing that has been given that all the benches they are bed. No bed is a bulb. तो bulb अलग से दिया हुआ है यहाँ पर. No bed is a bulb. Some bulbs are lamp. So some bulbs are becoming lamp. So lamp can be here also. Lamp can be here also. Like this also. So अभी के लिए मैं यहाँ पर consider कर रहा हूँ lamps. But lamp can also be like this. Now which of the following can be inferred? Some beds are lamp. No, this cannot be inferred. It can be there, it cannot be there, but surety नहीं है that some bulbs beds can be lamps. This cannot be. Some lamps are beds. Again the same. ये भी हम surety के साथ नहीं बोल सकते because ये ऐसा कोई conclusion नहीं दिया हुआ है. So 1 and 2 दोनों में से कोई भी नहीं. So correct option will be D. Yes. Next one. Option C, 125%. Yes. That's correct answer. So the radius of right circular cone is increased by 50%. We need to identify the percentage change in the volume. So volume, what relation the volume has? It has pi r square h for a right circular cone. Now the circular cone, the radius has become 50% increased. When the radius is increased by 50%, it becomes 1.5 times. So you can simply substitute 1.5 over here, 1.5 r square into h. So we'll get 2.25 pi r square h. Now its volume increases by how much? So increase in volume, or I can say percentage increase in volume, it will be 2.25 pi r square h minus pi r square h upon pi r square h into 100, which you solve will become 1.25 into 100, that is 125%. Simple question. Yes. Try solving this one.
-1. Okay, I got answer. Anyone with some answers like this? Sir, -1 only. That's the correct answer. Very good. Let's see how we do this one. कैसे हम इसको solve कर सकते हैं. So I'll just try to take this in a simpler form. So what I will be having is 81. 81 I can write down as 3 raised to 4 multiplied by again 4. I can write down square plus upon 5 square raised to the power x plus 2. This is further divided by 3 by 5 raised to the power 2x plus 4. This is whole thing is equal to 144, which I can again write down as 12 square. Right. Now I have 3 raised to 4 over here. जिसको मैं सामने चाहूँ तो भेज सकता हूँ, but there is no need. There is no need. So what I'll be having is I'll be having 3 raised to 4 और यहाँ से मेरे पास बच जाएगा. Let's take it to this step. We'll have 2x plus 4 divided by 3 by 5, which will begin which will become 5 by 3 if I change the sign, right? Because ये नीचे से ऊपर आ जाएगा. So it will 5 by 3 2x by 4. This whole thing is equals to 12 square. So again दोनों की power same है, so I can just take it inside the bracket. So I'll be having 4 by 5 into 5 by 3 raised to the power 2x plus this is equals to 12 square. Right. So यहाँ से I'll be left with 4 by 3. Right. 4 by 3 2x plus 4. This is 12 square upon 3 raised to 4 or 9 square I can say. So इस इक्वेशन को अगर मैं सामने लेके जाता हूँ, like I'll take it to the next level. I have 4 by 3 raised to the power 2x plus 4 is equals to 12 by 9 or square. Can I take 3 common out? 2x plus 4 और ये cancel हो जाएगा simply. So I'll get 4 by 3 square. Now these two things are similar, so I'll get अगर if I compare the coefficient, I'll get 2x plus 4 is equals to, which will be x equals to -1. So a little bit of simplification, and the correct answer will get over here as -1. Ask for 2 marks. बहुत simple question है. Try to solve this one. Option C, RST. Yes, that is the correct answer. Let's see how. यहाँ पर हमें काउंटर प्लॉट दिया हुआ है for a graphical reason. अब ये ऐसे जो प्लॉट्स आते हैं, they are usually used by civil engineers to find out the elevation at different points. जो काउंटर लाइंस दी हुई है यहाँ पर, these are at 25 meter intervals in this plot. तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 425, 450, so this is 475 और ये वाली 500 पे है ही, then 525, 550 ऐसे हम दी हुई है. Now the if in a flood the water level rises to 525, so this is the limit we have to identify कौन कौन से जो villages हैं submerged. अगर मैं P की बात करूँ, P is at the top, 550 है, यहाँ पर 575 होगा, उसके ऊपर है P, तो P safe. If I talk about Q, Q यहाँ पर है कहीं पे, तो यहाँ पर मेरे पास जो इनर है उसका मुझे कोई काउंटर प्लॉट नहीं दिया, बट इट विल बी 575 अगेन.
उससे पहले वाला मुझे 550 दिया हुआ है और इसके पीछे वाला होगा आपका 525। तो Q जो है वो 525 से ऊपर है और 550 से नीचे है, तो इट इज गोइंग टू बी सेफ, Q इज गोइंग टू बी सेफ। अगर हम R की बात करें तो R इज समवेयर ओवर हियर। अब R से यहाँ पर मुझे 450 दिया हुआ है, यहाँ पर तो ये लाइन हो जाएगी 475 और इसके बाद वाला जो काउंटर है वो 500 है। तो 475 से 500 के बीच पास R है एंड 525 तो उससे ज्यादा लेफर्ट लेवल है, सो R इज गोइंग टू बी देयर इन फ्लड, so R will be one of them as yes 450 है, 450 के बाहर ही है, तो S is going to be there in flood and T, तो यहाँ पर 100 है, इसमें आएगा मेरे पास 525, so 500 से 525 के बीच में T है, so it is also be going there in the flood. The correct answer will be R S G. They will get some. Next one. Option B. Okay. See, let's see how we can solve this one. A simple question, not a simple question, I would say. A good question. There are three boxes. One contains apples, another contains oranges, and the last one contains both apples and oranges. All three are known to be incorrectly labeled. ये एक important line है जो हमको पता होनी चाहिए, हर किसी को गलत label दिया हुआ है. If you are permitted to open just one box and then pull out and inspect only one fruit, which box would you open to determine the contents of the three boxes? So you will start with apples, oranges, and apple and oranges. See, the correct answer over here is going to be the box labeled with apple and oranges. Let's talk about it. Why? So when you open up a box labeled apples and oranges, so यहाँ पर आपने box लिया apple and oranges. So it is not the box which contains both. This is for sure because it has been incorrectly labeled. तो अगर यहाँ से आपके पास एप्पल निकलता है, ठीक है, तो आपको पता है जो नेक्स्ट जो दो बॉक्स बचे हैं दे विल हैव आइदर, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एप्पल निकला है, तो दे कैन हैव आइदर एप्पल एंड ऑरेंजेस बोथ एंड अनदर वन विल बी हैविंग ऑरेंजेस ओनली, ठीक है, तो ये दो चीजें रहेंगी. अब उसमें जो लेबल लिखा हुआ होगा, तो ऑब्वियसली जिसमें एप्पल लिखा हुआ होगा इट कैन हैव ऑरेंजेस एंड जिसमें ऑरेंजेस लिखे होंगे इट कैन हैव एप्पल एंड ऑरेंजेस बोथ इन एनी ऑफ द केस. तो आपने ये देख लिया, तो जिसमें एप्पल लिखा हुआ है दैट डोंट कंटेन एप्पल, सो इट विल कंटेन ऑरेंजेस, एंड जो आपके पास ऑरेंजेस हैं वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे. सो यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीवन कि कौन सा फ्रूट कहाँ पर है किसके अंदर. Right. So the correct answer over here will be apples and oranges. If you pick up that box, you will be able to know the rest of the part easily. सर पर वो तो किसी भी बॉक्स में होगा ना. Yes. हेलो. Yes. Sorry. मतलब हम अगर एप्पल वाला बॉक्स लेते हैं तो उससे भी पता चल जाएगा ना कि सामने वाले बॉक्स में या तो सिर्फ ऑरेंज होगा या ऑरेंज और एप्पल दोनों होंगे. Just मैं नहीं समझा. मतलब आप कह रहे हैं कि ये लेबल लेंगे एप्पल और ऑरेंज से, ये वाला हाँ. ऑप्शन बी. हम्म. पर वो तो हम किसी भी बॉक्स में लेंगे तो पता तो चल ही जाएगा कि सामने वाले दो दो बॉक्स में या तो एप्पल और ऑरेंज होगा या सिर्फ ऑरेंज होगा. नहीं, बट देखो अगर यहाँ से मैं ये ए ले रहा हूँ तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि भाई इसमें एप्पल है, अगर ये मेरा एप्पल वाला है, यहाँ पे मेरा एप्पल निकल गया, तो मेरे पास एप्पल तो ऑप्शन चला गया.
ठीक है, अब तो मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं। अब जो एप्पल वाला बॉक्स है उसके अंदर एप्पल निकलेंगे नहीं, उसके पास क्या निकलेगा, सिर्फ ऑरेंजेस ही निकलेंगे। तो तीसरा बॉक्स होगा दैट विल कंटेन एप्पल एंड ऑरेंजेस। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके सर। अगर लेट्स लुक इनटू अदर वे, इसको ऐसे देखते हैं। तो यहाँ पर सपोज मेरे पास एप्पल्स निकल गए, ठीक है, एप्पल एंड ऑरेंजेस है मेरे पास यहाँ पर। जो बॉक्स है, ये जो स्क्वायर बॉक्स में ये मैंने बॉक्स दिखाया हुआ है, सर्कल में जो एक्चुअल फ्रूट है मेरे पास, तो एप्पल एंड ऑरेंजेस जो मैंने सर्च किया, लेट्स से इसके अंदर मेरे पास एप्पल्स निकले। नाउ द ऑप्शंस दैट आई एम लेफ्ट विद ऑरेंज एंड एप्पल एंड ऑरेंजेस। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इस वाले बॉक्स में, जिसमें मेरे पास ऑरेंजेस लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इट कैन इट हैव ऑरेंजेस? Yes. It cannot have oranges because all the labels are incorrectly labeled, right? All the labels are incorrect. तो ऑरेंज वाले बॉक्स के अंदर ऑरेंजेस तो हो नहीं सकते, तो दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज एप्पल एंड ऑरेंजेस। तो एप्पल वाले हाँ। बॉक्स में ऑरेंजेस आ जाएंगे। नाउ लेट्स डू द सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस की बात करते हैं। तो अगर मेरे पास एप्पल एंड ऑरेंजेस का बॉक्स में उठाता हूँ, ठीक है, उसके अंदर से मेरे पास निकले ऑरेंजेस, ठीक है, बिकॉज इट कैनॉट हैव बोथ, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इनकरेक्ट लेबल है तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, तो उसके अंदर ऑरेंजेस निकले। अब जो मेरे पास दो बॉक्स बचे हैं उसमें से जिसमें एप्पल होगा, देखो अब ऑरेंजेस मेरे पास निकल गए तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं। यहाँ तो बचा है मेरे पास एक एक बॉक्स में होगा एप्पल एंड ऑरेंजेस, दूसरे में होंगे मेरे पास एप्पल्स। अब जिसमें एप्पल का लेबल लगा हुआ है उसके अंदर एप्पल्स हो नहीं सकते बिकॉज दैट इज इनकरेक्ट, तो उसके अंदर निकलेंगे मेरे पास एप्पल एंड ऑरेंजेस। और जिसमें ऑरेंज का बॉक्स होगा जिसके उसके अंदर निकलेंगे मेरे पास एप्पल। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट की सपोज अगर यहाँ पर ऑरेंजेस निकल जा रहे हैं, तो जो ऑरेंजेस वाला बॉक्स है उसमें ऑरेंजेस है नहीं, तो उसमें बचेंगे सिर्फ एप्पल्स ही। ठीक है, तो तीसरा वाला जो होगा उसके अंदर हमारे पास एप्पल एंड ऑरेंजेस आएंगे। राइट, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, जिससे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कोई भी हमारे पास जो है कौन से बॉक्स में क्या है। सो विल कीप इट अप टू दिस क्वेश्चन, and rest of the question will cover up in the next class. So if you have any doubt you can ask, or else you are free to leave. Thank you. सर आई एम हैविंग अ डाउट इन सम लाइक क्वेश्चन जो मतलब गेट में नहीं है बट कहीं पे थे, तो मेरे को अगर वो शेयर करने हैं तो मैं कैसे करूं, बिकॉज बहुत लंबे क्वेश्चन है वो। या तो आप राजीव सर के साथ शेयर कर देना, कोई इशू नहीं, वो मुझे बता देंगे, and we'll discuss take up it in the next class. ओके सर।